أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I have chosen a topic in English grammar. It is meant for 9th, 10th, 11th and 12th class students. The topic is not confined to these students only. Any student interested in English grammar, overall in English language, can enjoy this topic and learn the change of voice. My dear students, you must be knowing that voice has two kinds. Change of voice is something concerning the verb. And there are two voices. Number one is active voice and number two is passive voice. We need to know what are the rules to change an active voice sentence into a passive one. So that is what I have made this video lecture for. Now, my dears, let's have a look at these two sentences. Number one, Gauhar opens the door. The door is opened by Gauhar. There is not even an iota of difference in the meaning between these two sentences. Gauhar opens the door. Gauhar darwaza kholta hai. The door is opened by Gauhar. दरवाज़ा गवहर के ज़रिए खोला जाता है. So now what is the difference? Structural difference is there, and let's try to understand what the difference is. Number one, sentence number one, Gauhar opens the door. Now here I say both the sentences have the same meaning, so there is no difference in meaning of these two sentences. But in sentence one, the subject of the sentence, Gauhar, is the doer of action. Now in sentence one, in the पहले sentence में Gauhar जो है, this is subject of the verb, and it is the doer of action. It is the doer of action. यानी ये काम करना है. ओपन्स द डोर, यानी दरवाज़ा खोलने का जो काम है वो कौन करता है? वो गवहर करता है, और गवहर सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर काम करता है. सो जब सब्जेक्ट के ज़रिए काम हो जाए, सेंटेंस में सब्जेक्ट के ज़रिए काम हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो इस सेंटेंस का वर्ब है, यानी ये विच आई एम हाईलाइटिंग, this verb is in active voice. This verb is in, इसके थोड़ा फॉन्ट हम डिफरेंट देते हैं ताकि ये prominent बने. तो Gauhar opens the door. Gauhar is the subject. Opens is the verb. It is showing an action. जो काम है खोलने का काम, ये सब्जेक्ट ही करता है. तो सब्जेक्ट जो कि जब काम करे किसी सेंटेंस में, then the verb, गवहर सब्जेक्ट को नहीं बल्कि वर्ब को हम कहते हैं कि दिस इज इन एक्टिव वॉइस. तो अब एक मरतबा फिर बोथ द सेंटेंस हैव द सेम मीनिंग, बट इन सेंटेंस वन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यानी गवहर इज द डूअर ऑफ एक्शन, एंड द ऑब्जेक्ट द डोर, ये जो डोर है दिस इज द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट जो है इज द रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है, यानी खोलने का जो काम है वो दरवाजे पर हो रहा है. तो दरवाज़ा जो द डोर जो है ये बन गया यहाँ ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन इज रेफर्ड टू द डोर. सो जिस चीज़ या जिस शख्स के मतलब कोई काम, कोई एक्शन रेफर हो जाए तो उसको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो यह डोर जो है ये रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी इस पर काम हो रहा है. इसलिए सो व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब shows that the subject acts or does something, the verb is said to be in active voice. यानी जब इस वर्ब की जो फॉर्म है ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है,
यानी वर्ब हमने किया इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर, गवर्नर जो नाउन है, गवर्नर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने इस वर्ब को एग्री करवाया। तो जो ओपन जो वर्ब है इसकी फॉर्म इस तरह हमने इस्तेमाल की है कि ये दिखाता है सब्जेक्ट के सब्जेक्ट को काम करते हुए। यानी जब वर्ब फॉर्म, तो दरअसल ये ओपन जो है, दिस ओपन वर्ब, दिस इज इन एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट को एक्टिव दिखाता है। मख्तसर तौर हम यही कहेंगे, ये ओपन जो है ये फॉर्म, क्योंकि यू मस्ट बी नोइंग दैट वर्ब हैज मेनी फॉर्म्स, it has first form, second, third, fourth form. Four forms are there which you must be knowing, on which I delivered some lectures previously. So open is the first form, third person singular, second is opened, जिसको हम past tense form कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये चार फार्म्स हैं, और इन्फिनेटिव फार्म भी होती है। तो इन 4-5 फार्म्स में जो फार्म यहाँ इस्तेमाल हुई है वो है ओपन्स। सो ये ओपन जो वर्ब है ये इस तरह इस्तेमाल हुई है, इसकी फॉर्म ये दिखाई दी है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट एक्टिव है, तो इसलिए हम इस ओपन को कहेंगे ये है इन एक्टिव वॉइस। सो आई थिंक यू मस्ट हैव understood. Now sentence number 2, the door is opened by Gawhar. दरवाजे को, यहाँ इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अब गवहर नहीं, वो है द डोर, यानी जो अभी इस सेंटेंस ऊपर के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, अब इसमें ये सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है, अब देखो वर्ब की फॉर्म किस तरह बनी, अब ओपन नहीं बल्कि इज ओपन्ड, इज ओपन, यानी इसको हमने फॉर्म बी लगाया, इज यहाँ लगाया, और उसके बाद वो जो ओपन फर्स्ट फॉर्म थी इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस, अब ये इस सेंटेंस में बन गई थर्ड फॉर्म। तो जब अब इस वर्ब को इज ओपनर जो वर्ब है इसकी फॉर्म इस तरह हमने इस्तेमाल की है कि जो ये दरवाज़ा मतलब सब्जेक्ट है ये काम नहीं कर रहा है बल्कि ये काम रिसीव कर रहा है। तो वर्ब की फॉर्म इस तरह हम इस्तेमाल करें कि इस वर्ब यानी इस एक्शन का जो सब्जेक्ट है उस पर काम हो रहा हो या हुई हो या हो चुकी हो या होने वाली हो, तो हम उस वक्त इस वर्ब को कहेंगे दिस वर्ब, या ओपन सिंपली हम कहेंगे ओपन जो वर्ब है इट इज इन पैसिव वॉइस। अब देखो जो मैंने लिखा है इन सेंटेंस 2 द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो है वो है द डोर, इज द रिसीवर ऑफ इट, इस पर काम हो रहा है या हुई है। दैट मीन्स समथिंग इज डन टू इट, समथिंग इज डन टू दैट, यानी सब्जेक्ट पर यहाँ कुछ हुआ है। ऊपर के इन सेंटेंस 1 ये काम खुद कर रहा था गवर्नर यानी सब्जेक्ट, लेकिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है इस पर काम हुआ है। तो इस जब काम सब्जेक्ट पर काम हुई हो यानी विच व्हेन इट इज एक्टेड अपॉन, तो उस वक्त हम कहेंगे इस सेंटेंस के वर्ब को कि ये इन पैसिव वॉइस है। अब एक मतलब फिर डेफिनेशन, एंड इन सेंटेंस टू द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब द डूअर इज द रिसीवर ऑफ एक्शन, दैट मीन्स समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। So when the form of verb shows that the subject receives an action or is acted upon, the verb is said to be in passive voice। तो verb को हम यहाँ कहेंगे passive voice में, क्योंकि इसकी फॉर्म हमने इस तरह इस्तेमाल की है कि सब्जेक्ट जो है इस पर काम हुआ है। इसकी फॉर्म अब ये इज ओपनर, एक मतलब फिर देखो इज ओपनर, ओपन नहीं इज ओपनर, यानी फॉर्मा बी को लगा के इस वर्ब को बिल्कुल हमने चेंज किया। तो नतीजा क्या निकला, इसका जो सब्जेक्ट है इस पर काम हुआ है, यानी ये वर्ब फॉर्म हमें दिखाती है कि सब्जेक्ट पैसिव है, सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव, सब्जेक्ट इज पैसिव। तो इसीलिए इस वर्ब को हम कहेंगे कि ये पैसिव वॉइस में है। तो हम किसी वक्त हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है, नहीं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में कभी नहीं होता, बल्कि इसका वर्ब active voice, passive voice, because active and passive voice, these are something which are concerning the verb only. So I think you must have understood what an active voice and a passive voice verb is, or a passive voice sentence is. I think you must have understood. Now changes to be made. Now my dears, you must know that
we there are occasions when we are using only passive voice sentences, and there are occasions when we use only active voice sentences in real life situations. In real life, so we must know how to change an active voice sentence into a passive one, or how to change a passive voice sentence into an active one, or how to bring a passive voice sentence to active voice. So we must be knowing these points, and for that we must know what are the changes which take place while we are turning an active voice sentence into a passive one, or while we are turning a passive voice sentence into an active one. So there are some changes which we must know. Now what are the changes? Number one, the subject and the object are interchanged in the passive voice. When we turn a sentence from active into passive, what we need to do is that subject and object in the active voice sentences need to be interchanged. So when we turn them into passive voice, subject, that means the subject of the verb in active voice becomes the object in the passive voice. In the same way, similarly, the object in the active voice becomes the subject in the passive voice. यानी जो एक्टिव वॉइस में जब हम सेंटेंस होता है तो वहाँ जो वो ये सब्जेक्ट होता है या और ऑब्जेक्ट होता है, जब हम इसको पैसिव में लाते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. तो दिस इंटरचेंजिंग टेक्स प्लेस इन पैसिव वॉइस. इसकी एग्जांपल हमने दी है. अब देखो, फरहाद टेक्स टी. दिस इज द सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट. फरहाद चाय पीता है. फरहाद इज सब्जेक्ट, टी इज ऑब्जेक्ट, isn't it? Now when we turn it into passive voice, it becomes tea is taken by Farhad. Tea is taken by Farhad. फरहाद के जरिए चाय पी जा रही है या जाती है, पी जाती है. अब देखो यहाँ हमने सब्जेक्ट जो जहाँ ऑब्जेक्ट जो था टी, ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, इट्स नाउ बिकम द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस. इन द सेम वे फरहाद, द सब्जेक्ट इन active voice, now it is the object in passive voice. So this is the first change which we must make when we turn an active voice sentence into a passive one. तो ये change number one. अब change number two, एक और sentence है, Afshana is cooking meals. यहाँ Afshana cooking meals यानी खाना पका रही है. ये in present continuous में हमने लाया. यहाँ Afshana subject है, you know. meals जो है, meals object है. अब meals are being cooked by Afshana. meals are being cooked by Afshana. अब देखो meals जो हमने लाया, जो meals object था in sentence one, in active voice sentence, now it becomes subject in passive voice. meals was object in active voice, it becomes subject in passive voice. In the same way, Afshana, the subject in active voice, now same has been used as object in passive voice. So my dear, this is the change number one, interchange of subject and object. Let's have a look at the time. Now it is my dears, change number one. Up change number two, we will continue it in my in the second part of this lecture. Thank you very much.